start with A Letter to God, class 10. ठीक है? And A Letter to God by G.L. Fuentes. Okay? So यहाँ पर आपको दी गई है activity that you need to fill out the money order form given below using the clues that follow the form. ठीक है? So you can do this activity. So let's start with the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है हाउस का डिस्क्रिप्शन कि एंटायर वैली में एक अकेला हाउस था मिडल ऑफ द वैली. ठीक है, और ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब एक छोटे हिल के टॉप पे. ठीक है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जहाँ से आपको दिख रहा है रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एक्सेट्रा. ठीक है, so the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अभी इंट्रोड्यूस होता है हमारा कैरेक्टर. ठीक है, विच इज लेंचो. ठीक है, सो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see towards the sky in the northeast. ठीक है, तो अभी क्या बताया गया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरे सुबह के टाइम में लेंचो ने क्या किया, उन्होंने अपने फील्ड्स और स्काई की तरफ देखा टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देखा, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी मिल गई थी कि वहां से बारिश होती है, वहां से ही क्लाउड्स पहले दिखेंगे, उसके बाद बारिश होगी उनके फील्ड्स में. इसलिए दिया गया है कि he knew his fields intimately. Okay, now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. ठीक है, तो उनके घर में जो वुमेन थी, उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनको कहा कि हाँ हमें सच में पानी मिलेगा. yes, God's willing, भगवान की इच्छा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफोर है. एक तो क्लाउड्स को बड़े माउंटेन्स से कंपेयर किया गया है. क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू ह्यूज माउंटेन्स. मेटाफोर क्यों है, क्योंकि देयर इज कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज. ठीक है, ये दो वर्ड्स को यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये है मेटाफोर. ठीक है, सिमिलरली these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Raindrops are compared to new coins. ठीक है, the big drops are compared to 10-cent pieces and the little drops are compared to the 5-cent pieces. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. ठीक है, अभी बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लग गए. मतलब क्या है ना, आइस के गोले बड़े बड़े, जहाँ बहुत ठंडी होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे गिरते हैं. ठीक है, वैली है, वैली के बीच में है ना, तो इसलिए हेलस्टोन्स गिर रहे हैं. These truly did resemble new silver coins. ठीक है, हेलस्टोन्स कैसे दिख रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. एक और मेटाफोर, collect the frozen pearls. Hailstones are compared to frozen pearls. ठीक है, it is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the snow. The hail rained on the snow. ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थर थे, आइस के गोले थे, it rained on the snow. It rained on the house. ठीक है, house, the garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो आपको समटाइम्स 6 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हियर टू दिस. ठीक है, कि क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर हेलस्टोन्स कंपेयर्ड टू सॉल्ट एज शुगर इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर. ठीक है, फ्रेमिंग अलग आ सकता है, दैट्स द डिफरेंस, बट ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट को ही क्यों कंपेयर किया गया है, शुगर को नहीं, क्यों नहीं. बिकॉज आपको ऐसा आंसर लिखना है कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट रूइंस द टेस्ट इफ यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट.
ठीक है, it ruins the taste if used in excess amount, and hence therefore as hailstones have ruined the crop, the cornfield, similarly salt also ruins the food when it is used in large amount, while sugar makes the food sweet. है ना? ठीक है, अब बहुत सारा सॉल्ट डाल दोगे कोई भी खाने में तो नहीं खा पाएंगे. शुगर बहुत ज्यादा डाल दिया तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रहता है, जैसे कि और थोड़ा दूध डाल दिया, राइट? अपने दूध में अगर यार कॉफी में अगर बहुत ज्यादा शुगर हो गया है और थोड़ा कॉफी पाउडर डाल दो और थोड़ा दूध डाल दो, ऐसे सब रहते हैं. बट नमक अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो खाने लायक ही नहीं बचता है खाना. ठीक है, तो इट्स द रीजन. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि what is the meaning of a plague of locusts would have left more than this. तो इसका मीनिंग ये है कि लोकस्ट एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ग्रास हॉपर देखा है, यूजुअली देखा होता है. तो ग्रास हॉपर जो होता है उससे थोड़ा अलग रहता है वो, ग्रास हॉपर ये नहीं बोल सकते हम उसको. यू कैन जस्ट सर्फ इट इन द ऑनलाइन सर्फ कर सकते हो आप, व्हाट आर लोकस्ट्स. तो लोकस्ट जो होते हैं वो एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, तो अ प्लेग कलेक्शन ग्रुप ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. जितना हेलस्टोन ने छोड़ा है उससे भी ज्यादा लोकस्ट छोड़ जाते, ऐसा उसने बोला. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वील हैव नो कॉर्न. दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन. ऑल देयर वर्क, जो भी उन्होंने पूरा साल किया, इट कॉस्ट फॉर नथिंग. कुछ भी नहीं आया उनके पास वापस, है ना? उनको लगने लगा कि उनको अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो सब भूखे जाएंगे ये साल, उनको ऐसा लगने लगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, मतलब जो भी उन सोलिटरी हाउस, अकेले वैली में हाउस में जो रह रहे थे लोग, उनके हार्ट्स में, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है. बट रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, तो उनको लेंचो उनके उनके एंसेस्टर्स ने, उनके बड़ों ने लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया था कि गॉड के आईज जो है दे सी एवरीथिंग, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in his fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter to God, ठीक है, in which उन्होंने सारे अपने प्रॉब्लम्स लिखी. ठीक है, लाइक गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प हिम एंड हिज फैमिली एंड ऑल. ठीक है, तो उन्होंने पूरा लिखा कि हेलस्टोन ने क्या क्या किया और उनको कितने पैसे चाहिए. ही नीडेड 100 pesos. क्यों क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू सो द फील्ड अगेन एंड लिव टिल द प्लांट्स ग्रो अगेन और क्रॉप्स ग्रो अगेन. ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. है ना, भगवान का एड्रेस किसको पता है, राइट? तो जब फिर से आप एक क्वेश्चन आता है कि पोस्ट मास्टर का आप कैरेक्टर स्केच दीजिए. ठीक है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर. सो द पोस्ट मास्टर यहाँ पे दिया हुआ है, अ फैट एमिएबल, एमिएबल यानी फ्रेंडली, अ फैट फ्रेंडली फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned out serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence, a communication with God." ठीक है, so in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Let's answer the letter. बट जब उन्होंने लेटर को खोला, उन्हें तब पता चला कि इस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ अच्छा दिल या गुडविल, इंक और पेपर नहीं, कुछ और भी चाहिए. वो कुछ और क्या था? पैसे, राइट? लेंचो ने 100 pesos का डिमांड किया था. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged or forced to give something for an act of charity.
It was impossible for him to gather together 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a signature containing God. ठीक है, एक ही वर्ड था, सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, दैट इज गॉड. ठीक है, तो उन्होंने वो क्रेडिट भी नहीं लिया कि उन्होंने उनको हेल्प किया. राइट. सो द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier, थोड़ा जल्दी आए वो than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman जिन्होंने पोस्टमास्टर को लेटर लाके दिया था, वही पोस्टमैन ने जाके पोस्टमास्टर की तरफ से लेटर उनको दिया, लेंचो को दिया, जिसमें 70 पेसोस थे, उनको लेटर दिया. ठीक है, who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment satisfaction of a man who had performed a good deed, looked on from his office. उनके ऑफिस से वो देख रहे थे कि लेंचो का क्या रिएक्शन है. ठीक है, so लेंचो showed not the slightest surprise, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ उनको पैसे देख के, उनको लगा कि हाँ भगवान ने ही पैसे भेजे हैं. ठीक है, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. जब उन्होंने मनी काउंट किया वो गुस्सा हो गए. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. है ना. So immediately क्या हुआ, Lencho went up to the window to ask for pen and paper. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his eyebrow. Wrinkling यानी eyebrow का हिलना. ठीक है, his brow caused by the effort he had to make to express his words or ideas. ठीक है, so when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो ये भी आपको आता है as image question में आता है ये. Describe which of the images describes blow of his fist. ठीक है, तो blow of his fist का मतलब होता है ऐसा, मतलब fist जो है, fist यानी अपना पांचों उंगलियों को मिला के बनता है एक fist. ठीक है, इस fist को जोर से मारना, इसको बोलते हैं हम लोग blow of his fist. ठीक है, so the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. है ना, excitement होती है, उनको लगा होगा कि thank you बोला होगा, है ना. So the letter said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. ठीक है, तो सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उनको मदद किया था, बट लेंचो ने उन पर विश्वास नहीं किया. लेंचो बिलीव टू गॉड बट ही डिड नॉट बिलीव ह्यूमैनिटी. ठीक है, अगर एक सेंटेंस में हमें समरी बोलना हो तो. ठीक है, सो वी विल डू द एक्सरसाइजेस इन डिफरेंट वीडियोस. नो, थैंक यू.